Okay, recording शुरू है. This is the materials management. आप लोगों को पता है ये तो ERP है. इसमें लॉग इन कर रहा हूँ admin करके. Okay, now my intention, मेरा intention क्या है? इसमें एक lookups में एक डालना है, एक entry डालना है. यही तो मेरा expectation है. Okay. Okay, now what I am going to do is, what is the steps? Login करना है. Side by side we will write the notes B. Okay, today is 23rd November 2023. Okay, now what to do? Okay, I say Excel में लिख लो. Okay, this will be fine. Okay, test description, what to do. Okay, let me increase the size. Sorry, क्या करने वाले? Test description, precondition. इसके पहले क्या होना चाहिए? Steps, input, expected result. These things just remember. These are all the standard columns that we should remember. Okay. Test case में test description, precondition, steps, input. These are all the important columns. Now क्या करने वाला है? वही तो test description. Add a new UOM. एम क्या है? इसमें न्यू UOM एंटर करना है. ये करने के पहले क्या होना चाहिए? प्री कंडीशन तो यूजर मस्ट बी लॉग्ड इन. अगर लॉग इन नहीं किया तो एंटर नहीं कर सकते, तो इसीलिए लॉग इन करना चाहिए. राइट. स्टेप्स, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप तो ये तो होम पेज है. ये होम पेज से फर्स्ट UOM लिंक में क्लिक करना है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. साइड में लिखूं. ओके, सॉरी, नहीं, steps from main menu, click on UOM link. Okay, इसमें एक simple technique है. Okay, what is the simple technique? This is what is the, just 1 second. Text. Okay, click on the UOM link. कोई लोग ने UOM link to be clicked passive voice में लिखता है. That is not right. English wise it is correct, लेकिन एक्टिव वॉइस में लिखो. ये तो इंस्ट्रक्शंस है, इधर क्लिक करो. राइट. सो ऑलवेज राइट इन एक्टिव वॉइस. इनपुट तो कुछ नहीं है. इनपुट मतलब जो हम लोग टाइप कर रहे हैं. राइट. इसमें ब्लैकेट में भी लिखता हूं व्हाट टू टेस्ट. इनपुट तो टाइपिंग, इसमें टाइपिंग कुछ नहीं है, सो क्लिक ही करना है. एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? नाउ आई गो हियर, UOM में क्लिक कर रहा हूं. एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? एड UOM स्क्रीन डिस्प्ले होना चाहिए. That is the expected result. So we come here, we will write add UOM page is displayed. Right. ये क्लिक करेंगे तो ये होना चाहिए, ये करेंगे तो ये होना चाहिए. What is your step? What is the expected result? What is the next step? Next step में in this screen enter 5-digit code. Okay, A9001.
I'm just entering something, okay? Or say test UOM, enter कर रहा हूँ. Enter UOM code. That is the next step. वो next step next row में लिखना पड़ेगा, right? Enter UOM code. Code क्या है? Test UOM. This is what हम लोग टाइप करने वाला है. वो वाला इधर डाल दीजिए. एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं. अगर ये स्क्रीन जाकर, राइट, स्क्रीन जाकर टाइप करेंगे तो कुछ नहीं होगा, राइट? नाउ नेक्स्ट एंटर. दिस इज अ just input, okay? UOM. Now what I'm going to do is enter next step, enter UOM description. वो description क्या है? This is what our input. इस इधर भी expected result कुछ नहीं है, right? What is the third step? Third step तो click on add. Click on add, okay? Add हुआ, right? Now what is the step? You have to enter that step. Add करने के बाद क्या हुआ था? Add करने के बाद ये सब empty हो गए, ये दोनों. This is also expect, वो clear होना चाहिए. और इधर last देख लेंगे तो, right? Last page में हमारा entry इधर होना चाहिए, display होना चाहिए. दो expected results है, एक expected result है तो first ये दोनों fields clear होना है. दूसरी लास्ट पेज जाएंगे तो ये बिकॉज वो फाइनली ऐड करेगी. whatever entry we entered, it should appear here. दोनों expected result है. So now click on add button. Input कुछ नहीं है. Expected result क्या है? UOM, description fields to be cleared. This is one instruction, one expected result. दूसरी, in the last page of the grid, UOM, description must be displayed. This is also expected result. दो expected result है. What is that? One is after click करने के बाद these two fields to be cleared. In the last page, this should be displayed. Correct? That's it. So if you read this, क्या करना चाहिए? UOM को ऐड करना चाहिए. करने के पहला क्या होना चाहिए? ये क्या स्टेप्स है? Go here, click. क्लिक करने के बाद ये होना चाहिए. Then enter. What to type? इधर enter करना है. Finally click on add button. ये दोनों expected result है. Right? This one thing is called one test case. ये पूरी ये सब मिलकर it is one test case. Okay. This is the header. Okay. इस heading है. इसमें एकदम very clear instructions देना पड़ेगा. Is this clear? You will be seeing a few more examples. Is this clear now? Clear है तो please raise your hands. Right? Is this clear? Yes, no? Yes. Okay. Somebody was telling screen is not visible. Screen is visible now. Screen is because I am showing the screen. I am displaying the screen. Yes, sir. Screen is visible. Okay, good. Now I am going to do one more test case. One more test case. Okay. Remember CRUD, create, read, update, delete. हम लोग ने अभी create किया, view करना है, अभी edit करना है. UOM को edit करना है, right?
What is the test case? Next test case, edit UOM. एडिट करने के पहले क्या होना चाहिए? एडिट करने के लिए वो UOM should be added before. पहले वो UOM को ऐड करना है, बाद एडिट कर सकता है. ऐड ही नहीं हुआ तो एडिट नहीं कर सकता है. So what is the precondition? Precondition what to exist before, right? एक मिनट फ्रीज कर देता हूं. Okay. Now precondition is the UOM must be added before. So UOM पहले होना चाहिए. Then what is the steps? The steps is go to the last page of UOM screen. Okay, UOM grid, right? Steps. लेकिन the problem is मुझे पता है मैं तो लॉगिन किया, ये स्क्रीन को कैसे आना है, राइट? सो इसीलिए हम लोग ने क्या बोलते हैं, ऑलवेज स्टार्ट विथ होम पेज. होम पेज से शुरू करो. फ्रॉम होम पेज क्लिक ऑन UOM, राइट? इधर से शुरू करो. ऑल टेस्ट केसेस होम पेज से शुरू करो. सो फर्स्ट थिंग अगेन सेम स्टेप, कॉपी पेस्ट, राइट? देयर इज नो नीड टू टाइप. एक टेस्ट केस टाइप किया तो दूसरी टेस्ट के लिए ये तो इजी होगा, राइट? एक्सपेक्टेड, राइट? add UOM page is displayed. So first step same, from home page click karo, right? Now from here I click. This is one thing. Now click on edit button of the first one, right? Whichever there is a grid displayed, right? ये grid से पहली वाला क्या है? You can choose first one, second one or last one, whichever. It is up to you. It's nothing hard and fast rule. मैं तो last वाला को edit करना है. So I'll say click on last button, right? Now let me say enter that also. Click on last link at the bottom of the grid. Grid matlab table. What should happen? Last page must be displayed, right? This is the expected result. मैं इधर से last page click करूं तो last page click होना है. First page है तो first page display होना है. So now last page click किया, इधर आ गया. इसमें last item, okay? Just to UOM select करो, edit button को, edit link को click कर लो. This is the next step. Now I am saying click on the edit link that is for of the last UOM, right? Click on the edit link of the last UOM. Input कुछ भी नहीं है, मैं जा रहा हूं इधर. ये लास्ट पेज में लास्ट वाला, इसको क्लिक कर रहा हूं. क्लिक किया तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? वो कोड एंड डिस्क्रिप्शन ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए, करेक्ट? नाउ आई एम सेइंग इनपुट कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट दैट UOM एंड डिस्क्रिप्शन मस्ट अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द पेज. अपीयर हुआ ना? मैं इधर जाकर क्लिक किया, टेस्ट UOM and test input. This is a test input display. Now what I'm going to do is next step. This is modified UOM description. Retype किया, okay? तो डिस्प्ले इधर जाकर वो डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दिया. This is the next step. Next step मैंने क्या लिख रहा हूं? Type new description in the description field. Okay.
ENT. This is modified UOM description. Okay, मैंने display कर दिया. Okay, I think UOM description. Correct. Again, click add button. Correct. Now, next step is click add button. Then what is the expected result? Same thing. UOM description to be cleared. ऊपर ये clear होना चाहिए. ऊपर clear होना चाहिए. That is the first expected result always. Okay. Description to be cleared. The description on the last item on last page must be the new description. जो हम लोग नया एंटर किया, ये वाला तो नए वाला, ये तो एंटर किया, लास्ट पेज में लास्ट आइटम को ये डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. नाउ देख लेंगे होगा या नहीं. लास्ट लिंक को क्लिक कर रहा हूं. टेस्ट UOM. दिस इज मॉडिफाइड UOM डिस्क्रिप्शन. दिख रहा ना? So if you go through this, thing, add के लिए एक टेस्ट केस, मॉडिफाई करने के लिए एक टेस्ट केस, इसमें ये स्टेप सेम है, फर्स्ट स्टेप सेम, लेकिन सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप ये सब डिफरेंट है. फर्स्ट टेस्ट केस टाइप करने के लिए थोड़ा टाइम लिया. सेकंड टेस्ट केस में बहुत सारे आइटम कॉपी पेस्ट किया. नोटिस किया ना आप लोग? दिस इज कॉल्ड टेस्ट केस. हम लोग ने अभी दो टेस्ट केस हम लोग ने टाइप कर दिए. is the we will see one more. Is the concept now clear? Right? I think somebody is Shraddha, you have to probably re-log in. For all the other people, screen is visible. Okay. Is this clear? Clear है तो raise your hands. Good. आप लोग मैं और एक बार screen stop करके share कर दूं. Okay. I think somebody is having some trouble, so I am just sharing the screen. Right. Now अभी दिख रहा है क्या नहीं? Once again I am displaying the screen. So दो टेस्ट केस हम लोग ने टाइप किया. तीसरी टेस्ट केस डिलीट UOM ऐड किया, मॉडिफाई किया, डिलीट करने वाला है. प्री कंडीशन क्या है? सेम. डिलीट करने के पहले वो तो ऐड होना चाहिए. ऐड UOM must be added before. सेम थिंग फ्रॉम मेन मेनू, ये सब सेम है, कॉपी पेस्ट. Okay. Then next thing, next step is also the same thing. Click on the last link, right? Now, next step is also the same thing. Now, let me show you the steps. तो home page है. First step UOM click कर लो. Page display हो रहा है. Last page click करो. Last page display हो रहा है. What is the next step? ये दोनों step modify और delete के लिए same है. इधर टेस्ट स्टेप क्या है? एडिट क्लिक करने के बदल डिलीट डिस्प्ले क्लिक करना, डिलीट लिंक को क्लिक करना है. डिलीट क्लिक कर रहा हूं. नाउ अभी डिलीट क्लिक किया तो एक वार्निंग मैसेज ये तो डिस्प्ले होना चाहिए. दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, राइट? नाउ आई विल गो टू द टेस्ट केस डॉक्यूमेंट, राइट? क्लिक ऑन द delete link for the last item on the last UOM or last line.
in the last page. Correct? Now, a warning message. Are you sure you want to delete? Must be displayed. Must be. इधर देख लो, इधर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्लिक कर लो, एंटर कर लो करके, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या होना चाहिए? मस्ट बी डिस्प्लेड, राइट? और इज डिस्प्लेड, समथिंग लाइक दैट. You can simply say, instead of is, you can always use must be. ये डिस्प्ले होना चाहिए, ये डिस्प्ले होना चाहिए, ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, राइट? ये सब व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन. ओके, डिलीट लिंक भी क्लिक कर दिया. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मैं ओके क्लिक कर रहा हूं. ओके क्लिक किया तो राइट, वो बॉक्स निकल गया. लास्ट पेज जाइए, वो डिलीट हो गया, लास्ट आइटम डिलीट भी हो गया. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्लिक ऑन ओके टू कंफर्म डिलीट. एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? राइट, द लास्ट item on the last page must not be displayed. Correct? Add में, right? Add में, you look at it in the add. Add किया, add में जो हम लोग ने ऐड कर रहे हैं वो तो लास्ट पेज में लास्ट आइटम मस्ट बी डिस्प्लेड, लेकिन वो आइटम को डिलीट किया तो वो लास्ट आइटम ऑन द लास्ट पेज मस्ट नॉट बी डिस्प्लेड. जाके देखते हैं लास्ट पेज में लास्ट आइटम इट वाज टेस्ट यूएम ना, वो भी डिलीट हो गया. ये क्लियर है ना? नाउ हम लोग ने 3 टेस्ट केस को देखा. इज दिस क्लियर? गुड. अभी एक कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट केस, राइट? द प्रॉब्लम इज, बहुत सारे लोग पूछते हैं हम लोग को इधर काम करना है तो जाइए, क्लिक कर लो, फटाफट एंटर कर लो, ऐड कर लो, फटाफट एडिट कर लो, एडिट करो, फटाफट डिलीट कर लो. एक ही मिनट में ये तीनों काम फिनिश हो जाएंगे. लेकिन ये 3 टेस्ट के लिए हम लोग ने क्यों इतने सारे लाइंस एक्सेल शीट में टाइप करना है? इसमें क्या फायदा है? ये तीनों ऐड, एडिट और डिलीट करने के लिए सिर्फ 2 मिनट चाहिए, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए 10 मिनट टाइप करने में जा रहा है. इसमें इससे क्या फायदा है? ये मन में आ रहा है ना ये क्वेश्चन? यस सर, नो? Yes, sir. नो, द बेनिफिट, फायदा क्या है? अभी ये लिखा नहीं है तो कल हम लोग ने देखा, परसों हम लोग ने देखा ना डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंस. अगर ये नहीं लिखा तो जब हम लोग ये काम करते हैं तभी सोच के करना है. लेकिन एक बार सोचकर लिख दिया तो दूसरी बार सोचने के काम नहीं है, जरूरत ही नहीं है. सिर्फ इधर जाइए, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये काम करो. दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट. एक बार थिंक कर लो, सोच लो, लिख लो, सब्सिक्वेंटली उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम करना है. वो फर्स्ट बेनिफिट है. नहीं है तो बार बार सोचना पड़ेगा. रीथिंकिंग इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. एंड थिंकिंग, रीथिंकिंग के लिए याद रखना पड़ेगा. ये तो 3 टेस्ट केस है, अगर 300 टेस्ट केस है तो आपके मन में याद होगी क्या? नहीं, नहीं, वी कैन नॉट रिमेंबर. आपके स्कूल में, स्कूल दिन में 6वीं 7वीं 8वीं में मेमोरी कंपटीशन देखा क्या? कंडक्ट किया क्या मेमोरी कंपटीशन? एनीबडी रिमेंबर्स मेमोरी कंपटीशन?
memory competition में what do you do? Anybody remembers or no? Somebody says no. Who knows memory competition? That's a very interesting stuff. Okay, not photo. Aina says I know numbers. Aina, I will enter. I will open your mic. Okay, you try to talk. Okay, you describe. You can. Aina can. यशराज, हाँ यशराज आपको भी. You can now. I'm just opening your mic also. Aina, please tell what you know or Yash. बोल दीजिए. So we were given a list of things, different things, and we were given a time of 1 minute to memorize it. गिवन And मतलब देखना है क्या हाथ में पकड़ना है? also मतलब मैम ने डिक्टेट करके लिखवा के दिया था. दैट हाँ मतलब पहले नोट एक ब्लैक बोर्ड पे नोट करवाया था कि ये चीजें हैं. हाँ. डिफरेंट थिंग्स लाइक चेयर, फैन, स्विच एंड ऑल. और उसे हमें याद करना था 1 मिनट में, और उसके बाद फिर मैम ने ब्लैक बोर्ड इरेज कर दिया. और देन भी हमें पेपर पे वो सारी चीजों को नोट डाउन करना था. Okay, right. Yash, how did it happen? You tell. Yash, what is your experience memory competition? सर हम लोग के क्लास में मैम एक दो पैराग्राफ का एक स्टोरी बताती थी, उसके बाद उस पे क्वेश्चंस देती थी. हाँ ना, वो तो लिख के दिया हमारे स्कूल में. माय सर हमारे टीचर्स. स्कूल में भी हुआ था. हाँ, कैसे था? सर सेम उसमें टेक्निक? हम लोग नो सर, हम लोग में ऐसा था कि एक क्लासरूम दिया गया था जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे और उनको हाँ. विजुलाइज करना था, और फिर आके Correct. दूसरे क्लासरूम्स में बैठ के उनको लिखना था कि आपने वहां क्या Correct. देखा. करेक्ट, दैट इज द राइट मेथड. क्योंकि लिख बैक बोर्ड में हम लोग ने पढ़ना है, लेकिन विजुअल देखा तो ये चेयर है, टेबल है, चाक पीस है, डस्टर है, बुक्स है, राइट, ट्रॉफी है, हैंडबैग है, पेन पेंसिल, रबर, सब बैग, ये सब लोग सब कुछ आइटम विजुअलाइज करना है. हमारे स्कूल में पूरे साइंटिफिक टेस्ट ट्यूब, पिपेट, ब्यूरेट, इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी, स्विच, सबको एक टेबल, बड़ा टेबल में रखे. हमको एक मिनट या 2 मिनट टाइम देंगे उन लोग. पहले देखना है, देखने के बाद और दूसरी क्लासरूम को जाना है. ओके, उधर यू हैव टू कीप राइटिंग क्या देखा, लिस्ट ऑफ आइटम्स 1 2 3 करके. अगर वो चीज 100 चीज उधर है तो कितने चीज आप याद रख के लिख सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम 30-40. यस सर, 30-40 अप टू 40. हाँ, बिकॉज ह्यूमन माइंड में कैपेसिटी इतना ही है ग्रास्पिंग करने के लिए, राइट. टाइम तो लिमिटेड है, तो इसीलिए याद रखना मुश्किल है. सो दैट इज अ स्टैंडर्ड. एंड इन माय स्कूल हमारे तमिल टीचर ने एक टेक्निक फॉलो किया था. देखने के बाद हम लोग दूसरी क्लासरूम आ रहे हैं ना, उधर तमिल टीचर एक जबरदस्त कहानी ही विल टेल. ठीक है, शॉर्ट स्टोरी. वो शॉर्ट स्टोरी सुनने के पहले हमको 40 आइटम याद है, तो वो शॉर्ट स्टोरी सुनने के बाद हम लोग भूल जाते हैं, राइट. सिर्फ 20 आइटम लिख सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट में एक मूड में हम लोग ने एक माइंडसेट या माइंड फ्रेम में देखा, वो सेम माइंडसेट में हम लोग आ रहे हैं, देन यू विल रिमेंबर मोर. लेकिन वो माइंडसेट को बदल किया तो करेक्ट, यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग. बहुत सारे आइटम भूल जाते हैं. सेम वे ऑफिस में भी कल 100 टेस्ट केस को हम लोग ने सोच लिया, कल का माइंडसेट और आज का माइंडसेट अलग अलग है. कल क्या हम लोग सोचा आज याद नहीं है. सो इसीलिए मैक्सिमम 30-40 रिमेंबर कर सकता है, याद रख सकता है. लेकिन
100, 200, 300 टेस्ट केस है तो याद नहीं रख सकते. हमारा ह्यूमन माइंड हैज अ लिमिटेशन. सो इसीलिए बहुत सारे ईआरपीस के लिए 10,000 टेस्ट केस होगी, कोई भी रिमेंबर नहीं कर सकता. सो इसीलिए टेस्ट केस तो करने के लिए सिर्फ 1 मिनट चाहिए, राइट. लेकिन मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और एक बार. एक्चुअल ये टेस्ट केस करने के लिए सिर्फ 1 ही मिनट चाहिए हर टेस्ट केस को, लेकिन लिखने के लिए 5 मिनट चाहिए. लेकिन इसमें क्या फायदा है, वी विल नेवर फॉरगेट. नंबर 2, सोचने की जरूरत नहीं है. नंबर 3, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है तो कल आपने आज ऑफिस आया था, आज बीमार है ऑफिस नहीं आया इसीलिए, बट लेकिन ये टेस्ट केस को टेस्ट करना पड़ेगा. प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये डॉक्यूमेंट और दूसरी बंदों को देकर, ओके यू डू दिस, दैट पर्सन नीड नॉट नो एनीथिंग, जस्ट रीड कर लो फॉलो कर लो, रीड कर लो फॉलो कर लो, दैट्स इट. दूसरे आदमी को सोचने के लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉलो करना का जरूरत है. दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ द टेस्ट केस. लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डर है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है करके बहुत सारे लोगों को डर है. हम लोग ने बहुत रिसर्च किया. आई एम स्टॉपिंग द नो नो लेट द स्क्रीनशॉट बी देयर. ओके, क्यों पब्लिक ने डर रहा है टेस्ट केस लिखने के लिए? ओके, द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट दिस. ये टेस्ट केस डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है, अंग्रेजी में, लेकिन वो आदमी को इंग्लिश ठीक से नहीं आती, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो सब आ सकता है. तो इसीलिए उनका डर है, वो मैं अगर टाइप किया तो इसमें मिस्टेक्स होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा और ग्रामर मिस्टेक भी हो सकता है, तो इसीलिए टाइप नहीं करते हैं. इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है. आपको इंग्लिश ठीक नहीं है तो फिर भी राइटिंग में मैनेज कर सकता है. एनीबडी नोज द टेक्निक? एनीबडी नोज द टेक्निक? वो टेक्निक क्या है? मैं एक काम कर दूं. ओके, जस्ट ओके, ये टेक्निक, this is one of the major techniques. डरो मत. I think in the initial classes I told my story. मैं तमिल मीडियम में पढ़ा था लेकिन इंग्लिश ठीक नहीं था कॉलेज तक, फर्स्ट ईयर तक, तो इसीलिए बहुत डर था. So now the technique is very simple. ट्रांसलेट गूगल टाइप कर लो, ट्रांसलेट गूगल टाइप कर लो, राइट. ये तो इंग्लिश में है, ये तो हिंदी को ट्रांसलेट कर लो, राइट. नाउ ये भी कर सकता है. नाउ डिलीट लिंक. ओके, क्लिक ऑन डिलीट लिंक फॉर द लास्ट लाइन, द लास्ट पेज. अंतिम पृष्ठ की अंतिम पंक्ति के लिए डिलीट लिंक पर क्लिक करें, राइट. हम लोग को हिंदी मालूम है, ओके, हिंदी में टाइप कर लो. ओके, और एक गूगल ट्रांसलेट करो, गूगल. आपको हिंदी ठीक से मालूम है, राइट. हिंदी में टाइप कर लो, इसमें लैंग्वेज चेंज कर सकता है. हिंदी में टाइप किया, इंग्लिश में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो गया, राइट. सो इफ यू नो हाउ टू टाइप लाइक दिस और हिंदी टाइपिंग मालूम है तो यू कैन इमीडिएटली डोट सो. लेकिन ये एक हफ्ते के बाद आदत हो जाएगी, राइट. कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. सो बहुत लोगों को डर है
टेस्ट केस टाइप करने में बहुत डर है एंड हेसिटेशन है. दैट हेसिटेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ, इट इज नॉट उनको एप्टीट्यूड नहीं है ना, ऐसा नहीं है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, इट इज बिकॉज ऑफ इंग्लिश. राइट. इसका इजी टेक्निक, आपको हिंदी मालूम है, मातृभाषा मालूम है, वो मातृभाषा में टाइप कर लो गूगल ट्रांसलेट में, राइट हैंड साइड में इंग्लिश चूज कर लो ना. हिंदी से अभी मुझे तमिल में चाहिए, राइट, तमिल में हो गया. हिंदी से मुझे तेलुगु में चाहिए, राइट, तेलुगु में आ गया. राइट. नाउ रिवर्स, तेलुगु से हिंदी, से इंग्लिश, एनीथिंग इज पॉसिबल. technology is the biggest weapon that we have got, right. हमारे पास जबरदस्त आयुध है, that is technology. okay, so हिंदी में टाइप करेंगे तो इंग्लिश में अपने आप आ जाएगी इन गूगल ट्रांसलेट. इज द बेस्ट सिंपल सॉल्यूशन. इधर से कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, फिनिश्ड. एंड इसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक या एक भी ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी, 100%. वो तो गूगल का गारंटी है, नागराजन की गारंटी नहीं है, गूगल की गारंटी है. डू यू लाइक दिस? डू यू लाइक दिस फीचर? Yes, sir. Because that is why most of the people are afraid of typing in English. Now technology हमारे हाथ में है, right? Technology हमारे fingertips में. So use the technology for the right thing. एक हफ्ता 2 हफ्ता ट्राई मार लो, राइट. तीसरी हफ्ता में immediately you will be able to do automatically. ये तो आदत होना चाहिए, ट्राई करते करते आदत हो जाएगी. So this is the simplest technique, step by step instruction. टेस्ट केस में the simple concept is आपको क्या करना चाहिए, what to do, वो तो टेस्ट डिस्क्रिप्शन है. टेस्टिंग के पहले प्री कंडीशन ब्रैकेट में बिफोर, ये करने के पहले क्या होना चाहिए, प्री कंडीशन, क्या क्या स्टेप्स है. वन क्लिक इज अ स्टेप, एक टाइपिंग इज अ स्टेप, एवरी क्लिक एवरी टाइपिंग इज अ सेपरेट अलग अलग स्टेप्स है. टाइपिंग है तो क्या टाइप करना है, दैट इज इनपुट. क्लिक में इनपुट नहीं है, सिर्फ क्लिक इटसेल्फ इज एन इनपुट. एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये स्टेप करने के बाद, ये टाइप करने के बाद क्या होगी ऑन द स्क्रीन, दैट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. दिस इज कॉल्ड टेस्ट केस. ये टेस्ट केस है तो दूसरी बार सोचने के लिए जरूरत नहीं है. सारे टेस्ट केस, सारे टेस्टिंग कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद रखने के लिए जरूरत ही नहीं है. एक बार सोचकर एक बार टाइप किया तो काम खत्म. दूसरी दिन सिर्फ ऑफिस में सिर्फ फॉलो करना ही, इतना ही है काम. लेकिन सोचने के लिए, लिखने के लिए यू हैव टू टेक टाइम. विद इन दैट ऑल्सो अभी क्या अंग्रेजी में लिखना है, ये तो करेक्ट इंग्लिश है या रॉन्ग इंग्लिश है, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश है या गलत है, सोचने के लिए अगेन जरूरत नहीं है. गूगल ट्रांसलेटर जाइए, हिंदी में टाइप कर लो, जो भी आपके मातृभाषा है उसमें टाइप कर लो, अपने आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके गूगल विल प्रोवाइड. नाउ this is the concept for the day. Now what I will do is, any questions in this, any doubts before I proceed, any doubts? Okay, श्रेया, this semester exams कब है? दिसंबर लास्ट वीक, मतलब दिसंबर लास्ट से सर अभी डेट शीट तो नहीं आई है, बट लास्ट दिसंबर से स्टार्ट हो सकते हैं. ओके. ये तो हम लोग अभी
6th week में, right? We started on October 10th. अभी 6th week और ये तो 7th week. Actually 10 weeks ये पूरा ट्रेनिंग और 2 हफ्ते हम लोग ने मॉक इंटरव्यू और इंग्लिश स्पीकिंग में भी ट्रेनिंग देने वाले हैं. सो इसीलिए what we do is दिसंबर के बाद, एग्जाम के बाद कब शुरू होने वाले क्लासेस? तो कितना दिन छुट्टी है? सिंस आप लोग अपने कंप्यूटर या फोन से ट्रेनिंग ले रहे हैं, छुट्टी में भी एक घंटा ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हैं, हमको प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपके पास कुछ तकलीफ है तो बोल दीजिए, प्रिंसिपल से डिस्कस करने के बाद हम लोग ने बता देंगे. लेकिन मैक्सिमम 12 वीक्स या 11 वीक्स, राइट? बट एक हफ्ते दिसंबर एग्जाम के पहले we will stop it so that you will have your study time, study holidays maybe. You will अभी mid December तक या 10th December तक हम लोग कंडक्ट कर लेंगे. Within that, by 10th December you will be almost have complete 90% of the portions completed. Okay, उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग और बोलने के लिए, बात करने के लिए, इंग्लिश में बात करने के लिए, इंटरव्यू में क्या पूछेगा उन लोग, वो सब ट्रेनिंग होना चाहिए, राइट? सो 85 to 90% ट्रेनिंग 10th दिसंबर के पहले हो जाएगी. उसके बाद ये सब कैसे प्रोजेक्ट को फेस करना है, कैसे प्रोजेक्ट को इंटरव्यू को फेस करना है, क्या क्या क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस है, ये सब बता देंगे. गुड. एंड वंस आपके पास वो शेड्यूल आ गया तो, एग्जाम वो सेमेस्टर एग्जाम का शेड्यूल आ गया तो बता दीजिए, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे. कोई ना पूछा व्हाट इज यूओएम? यूओएम मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट. हम लोग कपड़े को कैसे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर या इंच में मेजर करते हैं, वो तो इंच या सेंटीमीटर, ये तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट. दूध को कैसे मेजर करते हैं? लीटर या मिलीलीटर में, वो मिलीलीटर या लीटर तो वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. आटा कैसे मेजर करते हैं? ग्राम या किलोग्राम, वो ग्राम या किलोग्राम एक मेजर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. यूनिट मतलब जो मेजरिंग के लिए चूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. गुड. एनी क्वेश्चंस? आपके पास एक ये यूआरएल है, राइट? दिस इज द यूआरएल. एनीवे आई विल सेंड इट टू यू, राइट? आई विल सेंड इट टू यू दिस यूआरएल इन द चैट. ये यूआरएल में, right, I have just typed it. It is in the Q&A. You already know this URL. You have already tested this ERP. You take some other link, items, whatever. You go to whichever link. उसमें add, modify, delete के लिए test case लिख लो. कल के लिए homework इतना ही है. And I will share this information, test case document in the drive. In this whole system में login करने के बाद बहुत सारे items है, right? बहुत सारे items है. UOM, tax code, right? Item category, currency, items, vendors, बहुत सारे हैं. इसमें you take, I have written for UOM. You take tax code or items या vendors या locations या stores या any of these, बहुत सारे items है इसमें. उसमें add, modify, delete के लिए आप लोग ने test case एटलीस्ट 3 टेस्ट केस लिखना पड़ेगा. दैट इज अ होमवर्क. क्यों add, modify, delete? रिमेंबर CRUD, CRUD, create, read, update, delete. Create, read, update, delete is the standard way of any software, in fact any system in the world. So create, read, update, delete करने के लिए टेस्टिंग 100% होना चाहिए. That is the mandatory stuff. So इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सैम्पल एप्लीकेशन में अपार्ट फ्रॉम UOM बहुत सारे लिंक्स हैं. ये लिंक के अंदर जाकर ऐड, मॉडिफाई, डिलीट करने के लिए टेस्ट केस लिखो. कल everyone should show at least 3 टेस्ट केस. दैट इज द
केस स्टडी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर सो हमें सिर्फ एक्सेल शीट में लिखना है या पेपर पे? पेपर